या सिटी ऑफ जॉय से, जहां से आप बहुत ही सफल अपना गवर्नर का कार्यकाल कर दिल्ली आए, पर वास्तविकता यह है कि आपकी अध्यक्षता में इस सदन में मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे जॉयफुल ओकेजन्स हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इस सदन की काम की महत्वता देखते हुए हम सब कोशिश करेंगे कि किसान पुत्र जो आज देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो एक प्रकार से हम सब के लिए प्रेरणा का स्तोत्र भी है, जिस प्रकार से इन्होंने एक बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से अपना जीवन शुरू करके आज इस उच्च पद तक की जर्नी ट्रैवर्स की है। मेरा पूरा विश्वास है कि हम सब भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे, अपने कार्य में भी, अपने काम में भी उसकी झलक आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जिस प्रकार से आपने एक बहुत वरिष्ठ वकील के रूप में देश की सेवा की, न्यायालय की सेवा की, शायद यू मस्ट हैव बीन द यंगेस्ट to become a senior advocate in the Supreme Court within 11 years of your practice. मैं समझता हूँ शायद उस समय जजेस ने भी कुछ स्पार्क देखी होगी, कुछ ऐसा अलग देखा होगा जिसके कारण आपको ये बहुत बड़ा एक प्रकार से स्थान मिला और बहुत बड़ी सर्टिफिकेट उच्च न्यायालय से आपको दी गई। एक नई परंपरा जो अब इस देश में स्थापित हो रही है, बड़े सामान्य घर से सामान्य जीवन बिताने वाले सामान्य साधारण परिवार के राजनीतिक नेता या समाज के नेता आज बड़े बड़े पदों पर हैं। हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक टीचर थी, छोटे से स्कूल में टीचर के पद से ओडिशा के वनवासी क्षेत्र से आकर आज वो इस देश के सर्वप्रथम पद पर है। आप एक किसान पुत्र, धरती पुत्र, जिन्होंने एक छोटे से गांव में, आज बताया गया सैनिक स्कूल से शिक्षा लेके 12 किलोमीटर दूर रोज चल के जाना, शायद ये भी एक कारण है कि आप इतने फिट हैं आज भी, और आज इतने उच्च पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक चाय वाले के घर पे पैदा होकर रेलवे स्टेशन पर चाय अपने बचपन में बेचकर अपनी शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने पूरा जीवन और आज 5 दशक से अधिक देश की सेवा में, समाज की सेवा में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। ये जो नई परंपरा है कि समाज के अंदर ये चेतना जगी है, समाज में एक विश्वास जगा है कि सभी के लिए इस देश में स्थान है। आज सरनेम के हिसाब से पद नहीं, लेकिन क्षमता और कार्य के हिसाब से लोगों को मौका मिलता है। मैं समझता हूं उसका एक प्रतीक आप भी हैं, और आगे आने वाले दिनों में आपके इस लंबे अनुभव का, आपके इस कार्यशैली का लाभ और मार्गदर्शन हम सभी सदस्यों को मिलता रहेगा। जैसे कहा जाता है, और अभी अभी हमारी बहन ने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ फोर्स, अ पावर, और वो पावर आपके घर में हमने देखा। हम सबका मैं समझता हूं ये अनुभव रहा कि जिस प्रकार से आपने सम्मान दिया परिवार के अंदर भाभी को, जिस प्रकार से आपने हम सब के बीच नारी शक्ति की बात कही, तो मुझे याद आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के अपने विचार रखते हुए उद्बोधन में ये बात रखी थी कि देश को जब हम विकसित बनाने की बात करते हैं तो नारी शक्ति को हमने और सशक्त बनाना होगा। और मैं समझता हूं बहन रजनी जी ने ठीक कहा कि उसका भी एक अच्छा उदाहरण हमें आपके घर पे देखने को मिला। ऊर्जावान व्यक्तित्व,
सदस्यों से जिस प्रकार से आपने निजी जुड़ाव बनाया है, आपका सहज मुस्कान, आपके सोचने की प्रक्रिया और क्विक विट और ह्यूमर हम सबको आपके प्रति आकर्षित करता है। मुझे विश्वास है ये जो इन्फेक्शियस स्माइल है आपका, ये आगे चल के सदन को भी चलाने में सुविधा देगा और आप जरूर हम सबको सही रास्ते पे रहने का मार्ग भी बताते रहेंगे। एक प्रकार से कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही थी, हमने आपका स्कॉलरली और रीजन्ड अप्रोच कल देखने का एक पहला मौका पहली बीएससी में हमें मिला। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि आपके कमेंट से कि स्टैटिस्टिक्स नहीं डिटरमिन करती हैं कि विषय को आगे कैसे लेके जाना है। स्टैटिस्टिक्स पे नहीं निर्भर होगा कि कोई बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाए या सिलेक्ट कमेटी में जाए। स्टैटिस्टिक्स हैव देयर ओन प्लेस, पर सब्सटेंस विल मैटर। सब्सटेंस के ऊपर तय करना पड़ेगा कि आगे कार्रवाई में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। समय भी बहुत जरूरी होता है, समय वेस्ट ना हो, समय का सदुपयोग हो और आखिर कोई ना कोई कानून या कोई ना कोई कार्य हम सबके समक्ष जब रहता है हाउस में, तो जरूर कोई ना कोई उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी समय की इंपॉर्टेंस है। और कई विषय ऐसे हैं जिसमें आम सहमति बन सकती है, आम सहमति से कार्य आगे तेज गति से बढ़ सकता है। क्योंकि अगर हमें इस अमृत काल में इस देश को विकसित बनाना है और जिसमें मैं समझता हूं देश का हर सदस्य एकजुट है, एक मत का है, तो स्वाभाविक रूप से समय की भी अपनी अहमियत है और जो निर्णय देश हित में है, जनहित में है, वो त्वरित लेने का भी एक बहुत बड़ा मैसेज देश को जाता है, समाज को जाता है। माननीय सभापति जी, मैं आपका एक और विषय के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से हम सबका मान रखा और इस उच्च सदन का, वास्तव में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मान रखा, जब आपने एक विषय जो कई वर्षों से सबको पीड़ा दे रहा था कि क्या पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून और ऐसा कानून जिसमें सर्वसम्मति थी, लोकसभा में सर्वसम्मति, राज्यसभा में एक एब्सटेंशन छोड़ दे तो सभी राजनीतिक दलों की और सभी बाकी सदस्यों की, जब सर्वसम्मति से कानून पारित होता है तो उसकी एक अहमियत है। और जो आपने वी द पीपल का उद्बोधन दिया, जिस प्रकार से आपने द विल ऑफ द पीपल के बारे में अपने एक रिसेंट भाषण में बात रखी, मैं समझता हूं इस सदन के हर सदस्य के लिए और हर सदस्य के आत्मसम्मान की आपने उस दिन चिंता की, आपने इंश्योर किया कि हमारा भी एक प्रकार से हौसला बने कि हम आगे चल के भी कानून देशहित और जनहित के बनाते रहे। माननीय सभापति महोदय, आपके जो 2 ओवरसीज विजिट्स रहे वो भी वास्तव में हम सबको बहुत गौरवान्वित करते हैं। आपको देखते हुए वहां पे बड़े बड़े विश्व नेताओं के साथ चर्चा करते हुए, और बाद में मुझे जानकारी मिली आपने किस बहुत तीव्रता से जो देश ने कोविड की महामारी की लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से जो कल ही उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी जिस बात का उल्लेख किया गया, जिस बात की तारीफ की गई कि कैसे पूरे देश ने मिलके, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सबने मिलके कोविड महामारी के सामने लड़ाई लड़ी, कैसे केंद्र सरकार ने भुखमरी नहीं होने दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के कोने कोने तक 80 करोड़ से अधिक भारतवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का जो काम किया, उसकी कल सुप्रीम कोर्ट में भी काफी विस्तार से तारीफ हुई है। आपने ये बात जब विश्व नेताओं के सामने और विश्व के सबसे बड़े और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नेताओं के सामने जब आपने रखी और आपने बताया कि उन्होंने सबने तारीफ की भारत की, तो मैं समझता हूं हर मेंबर का, हर सदस्य का सीना चौड़ा होता है, क्योंकि हम सबका भी उसमें एक छोटा योगदान है। माननीय सभापति महोदय,
मैं समझता हूं, when great people set the direction, others follow them. Under your leadership, we will work with the high ideals, high principles with which you will set the direction. And I'm sure the work of the Rajya Sabha, the work that we do in this upper house, the House of Elders, the House of States, will also resonate in the other houses, in the other assemblies across the country. I'm sure the way we are all working for a developed India, we are all working to take prosperity to the last man at the bottom of the corridor, the last man at the bottom of the pyramid, जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अंत्योदय की भावना से आज हम सब काम कर रहे हैं कि देश में कोई वंचित ना रहे, कोई शोषित ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे, समाज के हर वर्ग का बिना भेदभाव से उत्थान हो, उस काम में पूरा देश आज देश में भी और दुनिया में भी अपना वर्चस्व बना रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा भी कर रही है, भारत की ओर देख रही है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के लिए, प्रगति देने के लिए। आज पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे 140 करोड़ लोगों में जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उससे पूरा विश्व आकर्षित भी होता है और उनको उम्मीद भी भारत के ऊपर टिकी हुई है। और ऐसे में मैं समझता हूं इस सदन की भी भूमिका बहुत अहम रहेगी। आपके कुशल नेतृत्व में, आपकी बुद्धिमत्ता से हम पूरे देश को ऐसा संदेश देंगे कि हम एक अच्छा सदन अच्छी तरीके से चलेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और जो देश के करोड़ों लोगों की आशाएं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने में हम सब अपना दायित्व निभाएंगे। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन के हर सदस्य के बिहाफ पे कि हम अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का जरूर निर्वहन करेंगे और इस सदन की कार्रवाई को अच्छी तरीके से चलाएंगे। आपका पुनः इस आसीन पर पद ग्रहण करने पर हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Honorable Leader of the House, Shri Piyush Goyal ji, Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge ji, Honorable former Prime Minister, Shri S.D. Devgowda ji, Honorable Ministers, Honorable Leaders of respective parties, Honorable Members. Deeply moved and touched by the indulgent words of welcome by the Honorable Prime Minister, Honorable Leader of Opposition, Leader of the House, and those who followed. Grateful to the Honorable Members of Parliament for affording opportunity to be in service of Bharat as Vice President of India and Chairman of this august House. Looking forward to contributing to growth trajectory of the largest vibrant democracy in the world and vindicate its trust and confidence. Honorable members, availing this historic opportunity to share some concerns with the distinguished members of this august House. Terms Upper House and House of Elders, though not part of the official glossary, amply reflect uniquely significant importance of this institution. Nation justifiably expects the House of Elders to take decisive directional lead in reaffirming and enhancing the core values of the Republic and set up the traditions of parliamentary democracy, exemplifying the highest deliberative, emulative standards. Today, as we are in Amrit Kal, we cherish one of the world's finest constitutions as our own. Members of the Constituent Assembly were enormously talented with impeccable credentials and immense experience.
the Constituent Assembly, given the scenario then, was as representative as was practicable. Honorable members, with each election, there has been progressively authentic enhancement in the representation gradient. Presently, the Parliament reflects with authenticity the mandate and aspiration of the people as never before. Honorable members, Constituent Assembly addressed sensitive, complex and critical issues, exemplifying sublimity, engaging in dialogue, discussions, deliberations and debate, marked with cooperative and consensual attitude. Diverse issues were traversed without there being any disruption, any rancor. Obstruction and disruption of proceedings of parliamentary practice or option are antithetical to democratic values. Contemporaneous scenario on this count is concerning and makes it imperative for us to follow the high standards set in the Constituent Assembly. We need to be cognizant of severe public discomfort and disillusionment at the lack of decorum in the temple of democracy. Honorable members, democracy blossoms and flourishes when its three facets, the legislature, the judiciary, and the executive, scrupulously adhere to their respective domains. The sublimity of doctrine of separation of powers is realized when the legislature, judiciary, and the executive optimally function in tandem and togetherness, meticulously ensuring scrupulous adherence to respective jurisdictional domain. Any incursion by one, howsoever subtle, in the domain of the other has the potential to upset the governance apple cart. We are indeed faced with this grim reality of frequent incursions. This House is eminently positioned to take affirmative steps to bring about congeniality amongst these wings of governance. I am sure the honorable members will reflect and engage in way forward stance. Honorable members, a sense of democracy lies in the prevalence of the ordainment of the people, reflected through legitimized platform. In any democracy, parliamentary sovereignty is inviolable. We all here are under oath to preserve it. Power of the Parliament of the day to act in exercise of its constituent power, to amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure is unqualified and supreme, not amenable to executive attention or judicial intervention, except for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of the Constitution, envisaged in Article 145(3) of the Constitution. Using this constitutional power to amend, Parliament enacted wholesome structural governance changes to further spinally strengthen our democracy. This has been by way of incorporation of Part 9, 9A and 9B in the Constitution, providing comprehensive mechanism for Panchayati Raj, municipalities and cooperative societies. Honorable members, in similar vein, the Parliament, in a much needed historic step, passed the 99th Constitutional Amendment Bill, paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support to the above,
On August 13, 2014, the Lok Sabha unanimously voted in its favor, with there being no abstention. This House too passed it unanimously on August 14, 2014, with one abstention. Rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. This process fructified into a constitutional prescription after 16 state assemblies out of the 29 states ratified the central legislation. The President of India, in terms of Article 111, accorded his consent on December 31, 2014. This was culmination of a basic, fundamental parliamentary process. This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court on October 16, 2015, by a majority of 4:1, finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of basic structure of the Constitution. Honorable members, there is no parallel to such development in democratic history, where a duly legitimized constitutional prescription has been judicially undone. A glaring instance of severe compromise of parliamentary sovereignty and disregard of the mandate of the people, of which this House and the Lok Sabha are custodians. Honorable members, we need to bear in mind that in democratic governance, basic of any basic structure is the prevalence of the primacy of the mandate of the people reflected in the Parliament. Parliament is the exclusive and ultimate determinative of the architecture of the Constitution. It is disconcerting to note that on such a momentous issue, so vital to democratic fabric, there has been no focus in the Parliament now for over 7 years. This House, in concert with the Lok Sabha, being custodian of the ordainment of the people, is duty bound to address the issue, and I'm sure it will do so. Honorable members, authorities in constitutional positions in any institution are required to exemplify their conduct by high standards of propriety, dignity, and decorum. Time for all constitutional institutions to reflect and give quietus to public display of adversarially challenging stance, trading or exchange of advisories emanating from these platforms. I urge the members of the House to proactively catalyze evolution of wholesome, cordial ecosystem, ending this aberration. It is institutional, seamless, correct, marked with mutual trust and respect that generates ecosystem best suited for serving the nation. This House needs to catalyze this wholesome environment to promote synergic functioning of constitutional institutions, emphasizing need to respect Lakshman Rekha. Honorable members, as Vice President, I had the honor to represent the country at the India-ASEAN and East Asia Summits in Phnom Penh, Cambodia on November 12 and 13, 2022, and at the FIFA World Cup inaugural ceremony in Doha, Qatar on 20th November 2022. I share with you my deep sense of pride and satisfaction of the level of respect India commands amongst world leaders
and their hope and expectation that our growth trajectory generates global peace and prosperity. Honorable members, I look forward with hope and expectation to pleasant and fruitful association so that we all, in togetherness, optimally serve the nation. Once again, I thank you most earnestly for your generous felicitations, and I would do my utmost to come up to your very high expectations. As foot soldier of the Constitution, आप सबको प्रणाम कर कर मैं अपने कार्य का श्री गणेश करता हूं। I am sharing with you, honorable members, as this session commences, all members will be aware that India has taken over the presidency of the G20 with effect from December 1, 2022. This is a matter of great pride for the entire nation. It is also occurring as we welcome Azadi Ka Amrit Mahotsav. The G20 summit will, of course, be an unparalleled event in our diplomatic history. What is noteworthy, however, is that the almost 200 events at various levels will be spread across the length and breadth of the country. It will provide an opportunity to showcase India's rich and diverse culture, to demonstrate the vigor of our democracy and to highlight the progress of our development. We should all appreciate that broad sections of the society are being involved through a Jan Bhagidari approach. During the challenging times in global affairs, it is appropriate that we have chosen the theme, I quote, "One Earth, One Family, One Future," unquote. This is much in keeping with our traditional belief in Vasudhaiva Kutumbakam. Such a conviction of our global oneness will surely guide the shaping of the agenda and achievement of outcomes. I am sure that the entire House joins me in expressing our fullest support for the success of India's G20 presidency. The House stands adjourned for 1 hour.